everyone. A very good morning to all of you, bacho. We are live. We are back on ExamDost. We are back with a new series that is ESE Officers Practice Series, in which we are going to practice ESE previous year question. And the first subject that I am going to consider is the engineering mathematics. ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होने वाला है. Now the thing about engineering maths is it is very important from gate point of view. Its weightage is very high from gate point of view, but from ESE point of view the weightage is not as much. Gate point of view से बहुत important है, काफी अच्छा weightage है, but ESE point of view से इसका weightage उतना खास नहीं रहता है. Okay, so we are going to have only one session for ESE PYQs of engineering mathematics. Okay, तो हमारा एक ही सेशन रहेगा ESE PYQ का मैथमेटिक्स का. So I hope all of you guys are ready to solve the question based on engineering mathematics. तो आप सभी लोग अगर तैयार हैं तो let's get started with the first question. Are you guys ready? Come on everyone. Are you guys ready? Come on everyone. Are you guys ready? चलिए. सिद्धार्थ भाई, पेपर 1 का तो सीरीज प्लान नहीं है, ऑब्वियसली मेरे पास नॉन टेक एजुकेटर्स नहीं है, बट पेपर 1 का कंटेंट आपको सौरभ कुमार पांडे सर के चैनल पे मिल जाएगा. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विच ऑफ देम आर करेक्ट रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से करेक्ट हैं? Come on everyone, tell me which statements are correct regarding dot product. We have 4 statements. Dot product is less than equal to product of the magnitude. So this statement is correct. ये statement आपका सही है because A vector dot B vector is mod A mod B cos theta. Since cos theta is less than equal to 1. Okay, so answer is mod A mod B. कृणाल भाई, अभी पेड कोर्स के अंदर नेटवर्क चल रहा है और नेटवर्क के अंदर अभी हमने आज से ट्रांजिएंट स्टार्ट किया है. When two vectors are perpendicular, then their dot product is non-zero. Wrong. Perpendicular means theta is pi by 2. So cos pi by 2 is 0. So the dot product will be 0. Dot product of two vectors is positive or negative depending whether the angle is less than or greater than pi by 2. Correct? If the angle is less than pi by 2, so cos theta will be positive. Angle greater than pi by 2, cos theta is negative. Dot product is equal to product of one vector and the projection of the second on the first one. Also correct, because A dot B is mod A mod B cos theta. What is mod B cos theta? Projection of B on A. This is also correct. So answer is B. 1, 3 and 4. Is there any session or mock for ESE in paid course? तो ESE वाले बैच के अंदर yes, ESE का mock रहेगा, जो भी हमारे ESE वाले बैचेस हैं, बट अदर देन दैट बाकी बैचेस में नहीं रहेगा और सब्सक्रिप्शन में रहेगा. Sir, I feel that I didn't remember anything after covering the syllabus. What to do? Revise. Simple. Clear, bhai? And how many people are here who are comfortable with English but not with Hindi? ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी के साथ कंफर्टेबल नहीं है बट इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? Come on everybody, tell me. फटाफट बताइए. A square matrix of order 100 has a minimal polynomial of the order of, if it has 15 distinct eigenvalues. What is the order of the minimal polynomial?
at least 15. Okay. So order of minimal polynomial, or you can say roots of minimal polynomial. Minimal polynomial means the polynomial that we form the characteristic polynomial of minimum order is equal to distinct eigenvalues. So the order is at least 15, because if you repeat some eigenvalue also, the order will go above 15, but it cannot go below 15. It cannot go below 15. तो ऑर्डर जो होता है ना मिनिमल पॉलिनोमियल का, वो 15 के नीचे नहीं जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, या डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के नीचे नहीं जा पाएगा. व्हाई इट कैन नॉट गो बिलो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज? बिकॉज द रूट्स ऑफ द मिनिमल पॉलिनोमियल आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू. So we must make sure that all the roots are covered. So at least 15 order polynomial we need. ठीक है. ESE का पूरा PYQ नहीं, लेकिन लेटेस्ट ईयर्स के अंदर जो PYQ आए हैं वो हम जरूर लगाएंगे. दास भाई जेई का क्लास होगा रात को 8 बजे, रिवीजन क्लास. नाउ ट्राई दिस. आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. आइगन वैल्यू, कम ऑन एवरीबॉडी. What is the eigenvalue of the matrix? Come on, everybody. So, beta, this series I'll cover in a bilingual manner. So, this will be in English as well as Hindi. So, I want you all to spread this to your South Indian friends also, like who feel that we are not providing enough on our channel. This will be completely in dual language. ये दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको लगता है कि इस चैनल पे इंग्लिश में हम कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे. नाउ दिस इज वेरी इजी. सम ऑफ eigenvalues is equal to trace so answer is C. Only C option satisfies this criteria that the sum is equal to trace. C option. You don't have to solve it completely. Now, this set of equation has infinite many solutions. The value of A and B are. If the solutions are infinite, then the value of A and B are. Just a minute, let me verify. Yeah, this is correct. This is the data. This equation system has infinitely many solutions. Then the value of A and B are. Infinite solutions mean, क्या मतलब होता है? Rank of A is equal to rank of A augmented B less than n. A augmented B दोनों का rank n से छोटा आना चाहिए and both must be equal. So the rank should be less than n. At the same time, both the rank must be equal. Okay. So now 2 minus 1, 3, 1, 1,
2, 2, 5, minus 1, A, B. Now, what is to be done here? What we can do is, we have to apply the row transformation, correct? We have to apply the row transformation. So what is the row transformation that I apply? I will write R2 is 2R2 minus R1 and R3 2R3 minus 5R1. So this will become how much? 2R2, 2 minus 2, 0. Sorry, 2 minus 2, 0. So 2 minus minus 1, 3. 4 minus 3, 1. And then 4 minus 2 is 2. 10 minus 10, 0. Minus 2 minus 5 minus 7. Minus 2 plus 5. 3. 2A minus 15. And then 2B minus 10. Okay. Now I will write so 3 minus 3 is 0. 2A minus 16. Okay. Now this value must be 0. So A will be 8. 2B minus 12 will be 0. So B is 6. So both these values will satisfy that the rank is less than n. Because if this entire row becomes 0, rank of A and rank of A augmented B will become 2. अगर ये रो पूरी कंप्लीट 0 हो गई बेटा, तो A और A augmented B का लास्ट रो 0 हो गया, तो दोनों का रैंक ही 2 बन जाएगा. ओके, चलिए. The value of K for which the system of equation has a non-trivial solution. The value of K. For what value of K will you get a non-trivial solution? Non-trivial means where the solution is not all zeros. Try this. So for non-trivial solution, the determinant of A must be 0. Correct? Non-trivial solution के लिए A का determinant 0 आना चाहिए. So first I will draw the matrix A. पहले A matrix बनाते हैं. This must be non-zero. Now what we can do?
So I have added all the columns. So I take 3k minus 2 common, or what I'll do is I'll apply row transformation. थ्री के माइनस 2 माइनस 3, तो 3k minus 11, 3 minus 3 0, 0, 3 minus 3 0. Okay. So determinant will be like this. So the determinant must be 0, not non-zero. डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए भाई, मैंने यहाँ नॉन जीरो कर दिया, डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए. टू बाई थ्री 11/3 11/3. Okay, 2/3 11/3 11/3. For a non-trivial solution in a homogeneous system, the determinant must be 0. Suraj bhai, this is not a doubt session. What will be the value of A conjugate? Just a minute. Okay, try this. mod A 0 आएगा ज्योति भाई. What will be the value of A into A conjugate? Now, what is conjugate transpose of A? Now, let us multiply. We should get a 2 cross 2 matrix. First row into first column. 4 minus 1, 3. Or 25, 28. First row. Just a minute now. First row into first column. 4 minus 1 is 3. 3 and 9 are 12. 2, 4 minus 1, 3. 4 plus 1. 4 plus 1, 5. 5 or 9, 14. 14 or 10, 24. 14 or 10, 24. Okay. First row into second column. Minus 10 minus 5 iota. Minus 3 iota. So minus 10 minus 8 iota. Minus 10 plus 10 iota. हाँ तो अब कितना आएगा भाई? -20 plus 2 iota.
minus 20 plus 2 iota, then minus 10 plus 5 iota plus 3 iota, 4 minus 2 iota और minus 1 minus 3 iota. पच्चीस और एक 26 आयोटा और माइनस आयोटा 1 और एक 26 और 46. ठीक है, दिस इज हर्मिशियन. और डायरेक्टली भी प्रॉपर्टी से कर सकते हो बेटा, डायरेक्टली भी आप प्रॉपर्टी से कर सकते हो. इज ऑलवेज हर्मिशियन डायरेक्ट. ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो. बाय डायरेक्ट प्रॉपर्टी यू कैन राइट दैट इट इज हर्मिशियन. It won't be orthogonal, it will be Hermitian. If lambda is the eigenvalue of A and A is the idempotent matrix, then for idempotent matrix, what happens to the eigenvalues? Come on everybody, for idempotent matrix, what happens to the eigenvalues? Zero or 1. Idempotent means A square बराबर A. Convert to eigenvalue lambda square equal to lambda. So that means either lambda is 0 or lambda is 1. Eigenvalue of this matrix 5, 4, 1, 2. Come on everybody. Eigenvalue of this matrix 5, 4, 1, 2. हरे कृष्णा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपका नाम जितना अच्छा है काम उससे भी अच्छा है. ठीक है, बहुत ही बधाई आपको सिलेक्शन के लिए. ठीक है, हर्मिशियन का क्या होता है ज्योति प्रकाश, कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए. दैट इज aij शुड बी इक्वल टू abi कॉन्जुगेट. So what I saw here is these two elements are conjugate of each other and the diagonal element must be real. So that is what makes a Hermitian matrix. Of diagonal element being conjugate of each other and the diagonal element should be real. The characteristic equation will be this. So 5 minus lambda, 2 minus lambda, minus 4. So the answer is C, 1 and 6. The answer is C, 1 and 6. Very good. In which matrix eigenvector corresponding to different eigenvalues are orthogonal? Which matrix has a property that all the eigenvector corresponding to separate eigenvalues are orthogonal? Which matrix has that property? Come on everyone. Which matrix has the property that eigenvector corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal? Symmetric matrix. This is a property of symmetric matrix. Very good. 0 is a characteristic root of a matrix if and only if the matrix is
कौन सा समझ नहीं आया हमजा? विच वन डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है जहां A इंटू ए ट्रांसपोज यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यूनिटरी मैट्रिक्स होता है A इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए। यार अब कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करके आने पड़ेंगे ना, मैथ्स के तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑर्थोगोनल क्या है, आइडेम्पोटेंट क्या है। बताओ भाई। Yes, the matrix must be singular. That is, if lambda equal to 0 is an eigenvalue, then determinant, which is equal to product of eigenvalue, will be 0. Determinant 0 means singular matrix. टाइमिंग एनालिसिस क्लॉक स्क्यू आपके प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा, देखो सीक्वेंशियल वाले में कराया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप के आखिरी लेक्चर में होगा। The volume of the solid surrounded by the surface x by a to the power 2 by 3 plus y by b to the power 2 by 3 z by c to the power 2 by 3 is equal to 1. What is the volume surrounded by the surface? This is the equation of a surface. You have to tell about the volume that lies inside this surface. How to solve this? Consider like this. X equal to AU cube. B. I'm changing the system. I'm changing the system of coordinates. So this equation will become here. Now volume is basically dx, dy, dz mod j. This is my Jacobian. So how much will this become? The Jacobian del x by del u. Del x by del u कितना आएगा भाई? Del x by del v is 0. Similarly, this will be the value. Okay.
27 ABC. Now, how to calculate this volume integral over a sphere? What I can do is, I will go into spherical coordinates. मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आ जाता हूं क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन स्फीयर के ऊपर है. माय इंटीग्रेशन इज ओवर अ स्फीयर. द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1. So this is r to the power 6 sin की power 4 theta cos square theta. Okay. Then cos square phi sin square phi. Then du dv dw is r square sin theta dr d theta d phi. Okay. R will go from 0 to 1. Theta will go from 0 to pi. Cos square phi sin square phi is sin square 2 phi. Pi will go from 0 to 2 pi. Okay. So now we have to integrate this. We have to integrate this. ये क्लियर हुआ इंटीग्रेशन क्या बन रहा है. तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे ना तो ये आती है 4 पाई ABC बाय 35. 4 पाई ABC बाय 35. लंबा जाएगा लेकिन ये इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा. ओके. This will be lengthy, but you have to do by this integration only. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. अरे वेटेज ऐसे कम है बेटा कि जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर आप गेट में देखोगे तो गेट में 13% वेटेज है. ईएसई में अगर 15 क्वेश्चन भी आएंगे तो भी आपका वेटेज कम ही बनेगा एज कंपेयर टू योर गेट एग्जामिनेशन. इस सेंस में मैं बोल रहा हूं. लिमिट बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो फिक्स होती है ना. आर की लिमिट रेडियस तक जाती है. स्फीयर का रेडियस 1 बन रहा है. स्फीयर का रेडियस है 1. थीटा की लिमिट 0 से पाई जाती है. फाई की लिमिट 0 से 2 पाई जाती है. Now, let me first draw this. It is asking the area between the two curves. और बाकी ब्रांचेस के लिए तो वेटेज बहुत ही कम हो जाता है बेटा. ठीक है. रुको, हमजा भाई का दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, हम इसको हटा ही देते हैं. चलो भाई, जाओ भाई, एंजॉय करो. तो नाउ दिस विल बी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax x square equal to 4ay. Now, first of all, we have to find the intersecting points. So, y equal to x square by 4a. Then y square. So, 1 is x equal to 0. So, you have to go from 0 to 4a. Y square equal to 4ax
means y is root 2ax and x square equal to 4ay. So x square equal to 4ay. We will subtract the lower curve from the upper curve. Upper curve is the blue curve minus the lower curve. The lower curve is x square by 4a dx. X to the power half, the integration will be this 4a. 4 means 8 a root a minus 64a cube divided by 12a. Root 4ax. Okay. So root a into root a will become a square, 8 to 16, 32 by 3, 16 by 3. 16 by 3 a square. 16 by 3 a square. Okay, that is the area. The first four terms of the Taylor series expansion. Now, if you see the Taylor series expansion, it is doing about z minus 2. That is about z equal to 2. From options, series expansion is about z equal to 2. तो यही तो मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल में सिग्निफिकेंट बन जाता है क्योंकि दोनों पेपर में आता है। और अगर हम बात करें बाकी ब्रांचेस की तो सिर्फ उनके नॉन टेक में आता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन मैथ्स के अंदर नहीं नजर आते हैं। This series is for engineering services, beta. Engineering services PYQ we are solving. देखो इसमें क्या कर सकते हो, यू कैन डू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, so when you put z equal to 3, this will be 4 upon minus 1. Then when you put z equal to 4, 5 by 1. Now, what is the Taylor series? Z minus z naught to the power n. Okay.
तो माई फंक्शन ऑफ z -4 बाय z -3 प्लस 5 बाय z -4. So at z equal to 2, fz will be how much? P by 2. Now what about f dash z? (11 by 4). See the coefficient 3 by 2, 11 by 4. So which option? See, 3 by 2, 11 by 4. The option will be C. The option will be C. This is for all YouTube family, but we are putting it in Vidyut batch, ESE batches. ठीक है? अगर रोहित भाई देखो डायरेक्टली याद कर रखे तो बात अलग है. मैंने बेटा यही तो किया, बस फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव तो निकाला, इतना ही तो लगाया. फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, वो सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव से आगे मैं कहां गया. चलो ये देखो. If a force F vector displaces a particle in xy plane from 0, 0 to 1, 4 along the curve, what is the work done? करिए. नहीं बेटा महापैक में ESE कवर नहीं है. ESE PYQ इसलिए करा दे रहा हूं उसमें क्योंकि वो AE वाले बच्चों के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं, स्पेशली फॉर AE एग्जाम्स. चलिए. Force F vector displaces a particle, तो वर्क डन इज ऑलवेज, मुझे लग रहा है मैथ्स में एक से ज्यादा सेशन लगाना पड़ेगा. F डॉट dl, that is line integral. Okay. Now put x equal to t. I will do parameterization. Y equal to 4t square. dx by dt is 1. dy by dt is 8t dt. dxi plus dyj 2x square y dx plus 3xy dy. Now what I'll do is, टू एक्स स्क्वायर 2t square 4t square 8t to the power 4 dt 3xy 3t 4t square, so 12t cube into 8t 12 8 96. Now x is equal to t and x is going from 0 to 1, so t will also move from 0 to 1. 104 by 5. See, 104 by 5. वेरी गुड. हाँ ये वाला j वेक्टर होगा, j कैप. चलो 0 to pi by 6 cos 4 3 theta sin 6 3 theta. Come on. Find the value of this integration. Cos to the power 4 3 theta, sin to the power 3 6 theta. So please stand up and teach. Why are you sitting? तो इसमें भाई तुम्हारा क्या घट रहा है ये बताओ. अगर मुझे एक दिन में डेली 8 से 9 घंटे क्लास लेनी है तो ऑब्वियसली मैं 8 से 9 घंटे कॉन्टिन्यूसली खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि मेरे पैर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है.
it becomes very difficult for me to walk. And right now, any which ways, I am solving problems for you. So what will you gain if I am standing? अजीब अजीब तुम लोगों की डिमांड्स रहती हैं. अच्छा, समझ गए. क्या ही किया जाए ऐसे लोगों का. यार ये लोग स्पैमर रहते हैं, इतना ध्यान मत दो. बहुत दिन बाद तो बेचारा कोई आया स्पैम करने. चलिए स्टार्ट करें. चलो पहले बेसिक से शुरू करते हैं. इसको एक काम करो, एज्यूम 3 थीटा इक्वल टू एक्स. तो d theta is dx by 3. So when theta is 0, x is 0. When theta is pi by 6, it is pi by 2. Now I will apply the property of f of a minus x. Cos pi by 4 minus x is sine. Here pi minus 2x will be till this. So 2y will be okay. So I will be, कर तो सकते हैं एक्सपैंड, मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूं इसमें. Sin 4x cos 4x sine cube 2x. Sine cube 2x is actually 8 sin cube x cos cube x. मैंने 2 sin x cos x में तोड़ लिया. Okay. Now, can we do something about this? Rather than that, why not go into sine 2? That will be easier, na?
Now what we can do? थ्री थीटा को टी मानकर वॉलिस वाले इंटीग्रेशन से कर लेंगे। अब इसमें बताओ आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी काफी कॉम्प्लिकेट हो गया। एक बार को मैं साइन क्यूब को तो खोल सकता हूं और साइन क्यूब का इंटीग्रेशन आसानी से हो भी जाएगा। बात है साइन 5 को अगर मैं खोलता हूं, साइन 5 में दिक्कत आएगी। देखो ये होता है, यहां से ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा का साइन क्यूब का तो यहां से इंटीग्रेशन बन जाएगा। साइन 5 को अगर साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर में ओपन करें, बट साइन स्क्वायर से फिर ये साइन क्यूब बन जाएगा और ये तो अलग ही चला जाएगा। साइन क्यूब का तो फिर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन 5 में दिक्कत आएगी। cos x को z ले लें तो उससे क्या होगा, sin x dx वैसे बन जाएगा। कर सकते हो वैसे, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ये कर लो। एक काम करो, sin x इक्वल टू टी, तो cos x dx इक्वल टू डी टी। कॉस स्क्वायर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस 4 बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। एक कॉस एक्स मैंने बाहर ले लिया। साइन में अगर x 0 से पाई बाय 2 जा रहा है तो साइन x 0 से 1 जाएगा। माइनस माइनस प्लस 32 टी की पावर 7। एट टी स्क्वायर, 8/3, 8 टी की पावर 4, 8/5। ठीक आ रहा है? अभी आप लोग वीडियो देख पा रहे हो? आर यू गाइस एबल टू सी मी एंड हियर मी? Come on everyone, are you guys able to see me and hear me? Now, this will be 4, okay, 8/5, 8/5, 16/5 by 3. This will get cancelled. 24/5, 2/15, 1/15 तो है ऑप्शन। 24/5, 8/5, 8/5 is 16/5. वन बाय सिक्स साइन क्यूब 2x, तो 2 sin x cos x, 8 sin क्यूब x cos क्यूब x, तो 8 माइनस 16 sin x इक्वल टू टी, तो cos x dx इक्वल टू डी टी। इट इज 0 to 1, 0 to 1
Sine cube is t cube. Okay, this will be t cube. 1 minute. So 8t cube minus 8t5. 16t5 1 minus कर दी थी साइन क्यूब को ना टी क्यूब की जगह टी स्क्वायर लिख दिया था, तो इसका आंसर 1/15 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स. इसको बाय पार्ट से बता दो फटाफट. डू इट इंटीग्रेशन बाय पार्ट. सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स. चलो, बताओ भाई. This is algebraic function, first function, second function. So what will happen is first function integration of second minus derivative of first integration of second integration. Again, first function integration of second minus derivative of first integration of second integration. Minus 2 sin ax by a cube. 2ax cos ax, 1 by a cube, a square sin square. So answer is A. The answer is A. By parts integration. Try this. Try this. Again integration by parts. Again integration by parts. चलिए भाई. This is algebraic. This is exponential. First function integration of second minus derivative of first. Again, first function integration of second minus derivative of first integration of second का integration. A square x square plus 2ax plus 2. Sorry, minus 2x. A square x square minus 2ax plus 2. So here there must be a cube. ठीक है, a cube आना चाहिए नीचे, बाकी c है. बाकी तो c है, नीचे a cube आएगा. Solution of this differential equation.
solution of the differential equation so we can solve this variable separable method. Okay. Now if I integrate this will be C option. C option डायरेक्टली. ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो. मैंने पता है क्या सोचा, ये 1/√x कब आता है? 1/√x तब आता है जब आप 2√x का डेरिवेटिव लेते हो. तो यहां पे भी अगर आप एक 2 ले लोगे, ये वाला 2 अंदर ले लोगे ना, तो ये √x का डेरिवेटिव बन जाएगा. ये √x का डेरिवेटिव बन गया बेसिकली. ठीक है, ऐसे ये भी √1 - x² का डेरिवेटिव है. आप ये सोचो, अगर आप लिखोगे ना इसका डेरिवेटिव, इसका ये आएगा, तो ये यहां से मैंने सोचा कि इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए, तो दिस इंटीग्रेशन विल बिकम √1 - y², √1 - x². Try this. This is a homogeneous equation. This is a higher order homogeneous differential equation. Okay, higher order homogeneous differential equation. So what will be the characteristic equation? C4 plus 2c² or sorry, instead of C I will write D. D4 minus 2d³ plus 2d² minus 2d plus 1. Now what we can do is, so d equal to 1 will satisfied. 2 plus 2. D equal to 1 is a root. So basically what you can do is, so what I have done is 2d square. 2d square I have written as d square d square. So this will be so this is d minus 1 square. So the roots are -1 plus minus j. -1 is a repeated root. Sorry, +1 plus 1. 1 is a repeated root. So answer is this. 1 is the repeated root. So the answer will be C. ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने 2d स्क्वायर को d² में तोड़ा.
अब पहले 3 टर्म्स में से डी स्क्वायर कॉमन निकाला और दूसरे 3 को ऐसे ही रहने दिया, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन में आ गया। ठीक है, ये बन गया d-1 का होल स्क्वायर, तो इसके दो रूट्स हो गए 1 और 1, और इसके हो गए प्लस माइनस आयोटा। जब रूट्स आयोटा में आते हैं तो कॉस और साइन बनता है, और जब कोई रूट रिपीटेड आता है तो हमें c1 प्लस c2 x करके लिखना पड़ता है। बेटा even for 2027 batch EC right now network analysis is going on. So what is the difference between 27 and 26? In 27 batches we only run one subject at a time, whereas in 26 batches we run two subjects at a time. Solution of differential equation. Find the solution of the differential equation. Come on everybody. Find the solution of the differential equation. चलिए भाई, let's see this. First of all, I will solve the homogeneous equation. First of all, I will solve homogeneous equation, okay, by making RHS equal to 0. So the roots are like this. So what is the solution of the homogeneous equation? This is your complementary function. What about particular integral? 3. Now I cannot directly put d equal to 2. Okay. Because 2 is the root of this. We take the derivative of the denominator. The derivative is 2d minus 1. 2d minus 1. Now we can put d equal to 2. So this will be x e to the power 2x. This is my particular integral, x e to the power 2x. Now y0 is 0. Okay. And y dash 0. I will put x equal to 0 here.
this will be minus 2. Now C2 is minus C1. So the answer will be D. The answer will be D. D आना चाहिए यार, एक बारी चेक करो नीवा भाई, D आना चाहिए। इसमें तो 0 पे 0 भी नहीं आएगा, 0 पे 2 आ रही है वैल्यू, y0 0 आना चाहिए, तो आंसर शुड बी D। ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप डायरेक्टली d की जगह ना e की पावर में जो आ रहा है, अगर e की पावर ax है तो d की जगह a डाल दो। लेकिन d की जगह a डालने से प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहां पे फंक्शन 0 बन जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो x मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे डेरिवेटिव लीजिए, अब आप d की जगह a डालिए। Whenever you have the function e to the power ax, to find particular integral, directly you can put d equal to a. But when I put d equal to 2, this will become 0. In that scenario, we multiply by x, we take the derivative of the characteristic polynomial. Now I can put d equal to a. Now there are two unknowns, c1 and c2, which I will find using the initial condition. So the answer is D. सना बेटा, सेकेंड ईयर इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द गेट प्रिपरेशन। और टीचिंग स्टाइल काम एंड कंपोज्ड क्यों है? देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है या फिर अच्छा करना है, आपका माइंड ही शांत नहीं है, आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं है, तो यू कांट एब्जॉर्ब नॉलेज। फॉर एब्जॉर्बिंग नॉलेज, फर्स्ट ऑफ योर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन द कॉन्सेप्ट। चलिए ट्राई दिस। y इक्वल टू 1 and dy by dt is 0 when t equal to 0. This is a homogeneous equation. So the characteristic equation becomes like this. D is plus minus iota. When we have such kind of roots, I will write C1 cos t plus C2 sin t. So at t equal to 0, y is equal to C1, which is given as 1. And dy by dt minus C1 sin t plus C2 cos t. So at t equal to 0, dy by dt is C2. dy by dt is C2 is 0. So C1 is 1, C2 is 0. B. B. Okay, cos t. Yes. The value of delta cube y, where delta is the forward difference operator. क्या रहा है? 12। क्या बात है अंगराज भाई, बहुत ही बढ़िया। Now this coefficient is A3. H is not given.
तो 12, so the answer is 12. BHEL एग्जाम से क्यों डर रहे हो भाई, गेट से खतरनाक थोड़ी हो सकता है। ये x स्क्वायर होना चाहिए, दिस विल बी योर यूलर कॉची इक्वेशन। ट्राई करिए, यूलर कॉची इक्वेशन है। तो आप यहां पे क्या करते हो बेटा, dy बाय dx अगर d है तो दिस x स्क्वायर dy स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज m माइनस 1 माइनस m प्लस 1। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज m माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, रिपीटेड रूट। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 प्लस c2 x log x, c1 plus c2 x log x. So either the option should be A or C. But what we need to find out is the particular integral. Particular integral भी निकालना पड़ेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, x dy by dx आप ले लेते हो dy by dz by dx, dy by dz ले लेते हैं, z को log x ले लेते हैं, z हमारा log x हो जाता है, z is basically log x। नहीं, तो ये तो यहीं से बनी है ना सीधे सीधे, ये वाला ऑप्शन, ये log होगा क्योंकि यहाँ पे z होता है log x, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली d आ जाएगा। m आपका रिपीटेड रूट है ना, एक सेकेंड, देखो ना ऐसे बनता है सॉल्यूशन, z होता है log x, आप ऐसे बनाओगे ना यार, रिपीटेड रूट ऐसे आता है, ऐसे आता है, तो यहाँ पे d आएगा, m माइनस 1 का स्क्वायर और log x को आपने z कह दिया, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया z अपॉन m माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको पॉलिनोमियल को एक्सपैंड जब कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा z में, फिर z को log x रख देंगे। बट यहाँ पे आपको इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत ही नहीं पड़ी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही आंसर मिल गया।
Directly from complementary function you get the answer. You don't need to go till particular integral. Find the solution of this differential equation. Find the solution of this differential equation that I have given you now. So if you see, as compared to GATE, the differential equation weightage is good in case of ESE. The weightage of calculus is not that much, but the weightage of your linear algebra and the weightage of differential equation is good. So this function is M, this function is N. Now what is del M by del Y? X square minus 4xy. Del N by del X, 3x square minus 6xy. So both are not equal. This equation is not exact. This equation is not exact. Okay. Is this clear? This equation is not exact. यहां तक बात क्लियर है? Not exact. Now let us try to find the integrating factor. First I will try like this. 1 by mx plus ny. There are 4 cases. तो एक एक करके केस ट्राई करना पड़ता है भाई. But I will say the better method here will be to differentiate the options. Now, multiply this with the differential equation 1 upon y minus 2 upon x dx. Okay. Minus x upon y square minus 3 upon y dy. So the integration will be, here the terms not containing x. Terms not containing x. So this will be x upon y minus 2 log x plus 3 log y is equal to c. Integration of m plus integration of n with the terms not containing x. Integration of n with the terms not containing x. If u is equal to x log xy, where the relation between x and y is given, du by dx. Du by dx, beta, how do you calculate? Simply du by dx plus du by dy, dy by dx. Du by dx is log xy, 1 by xy derivative of xy with respect to x is y. Derivative of xy log x plus log y कर लो ना. log x कितना आएगा? 1 by x तो 1 आ गया. log y x log y. log x plus log y, x के रेस्पेक्ट में क्या? log x plus log y में 1 by x आएगा. ठीक है, 1 आ गया. du by dy is
with respect to y, the derivative will be x. dy by dx, 3x square plus 3y square plus 3y square dy by dx plus 3y plus 3x dy by dx. So dy by dx will be how much? 3x square plus 3y with a minus sign divided by 3y square plus 3x. So now here I will write dy by dx. Log xy plus 1 upon y square plus x. So 1 plus log xy minus x square plus y upon y square plus x minus x square plus y. Oh, प्लस आएगा तो माइनस ही. यार ये प्लस आना चाहिए था, तब सी आ जाएगा. Okay, this should be plus and then the answer should be C. The solution of this partial differential equation. The solution of this partial differential equation. So how you will solve this partial differential equation? You will write del z by del x is equal to, suppose D. Unexpected changes. Introducing HAPAffairs, the flight booking website that brings you flexibility like Suppose I write D1, D2. can be unpredictable. So we've Okay. Suppose I write D1 and D2. Is that clear? Now, del z, del cube z by del x cube is D1 cube minus 3 D1 square D2 plus 4 D2 cube is equal to 0. Now there are two variables in one equation, D1 and D2. Assume D2 equal to 1 and D1 equal to m. So this equation will be m cube minus 3m square plus 4. M cube minus 3m square plus 4. So m equal to 1 will satisfy, or m equal to minus 1. Minus 1 will satisfy. So I will divide it by m equal to 1, m plus 1. M equal to minus 1 is the root. So I am dividing the polynomial by m plus 1. So m cube plus m square
minus 3m square 4m. Travel with happy fares, easy refund. Easy refund. So this will be m plus 1 m square minus 4m plus 4. So m plus 1 m minus 2 whole square. So the roots are minus 1, 2 and 2. Minus 1, 2 and 2. Okay. Now, the solution, when we talk about the solution or the complementary function, first of all, for minus 1 will be f1 y minus x. For plus 2, y plus 2x. But this is a repeated root, so x y plus 2x. Or x plus 2y, you can write y plus 2x or x plus 2y. So these three terms are common. What about particular integral? E to the power x plus 2y upon d cube minus 3d square d dash m cube d dash is 1 and d is m. D dash is 1 and d is m. Free travel with happy fares, easy refund. Easy refund. So what you will do is booking process 24/7 customer support. x plus 2y. Do one thing. Based on x plus 2y, put d equal to 1 and it is 2y, so put d dash equal to 2. Based on these coefficient, one 3327. Okay, based on the coefficient of x and y in the numerator, this will be the value. So the answer will be A. A will be the answer. Now the solution of the differential equation. Last question for the day. हाँ, नॉन टेक वाले पार्ट के लिए मैकेनिकल वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि नॉन टेक में तो आएगा ही मैथ्स. चलो, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. चलिए बताइए. 1 plus e to the power x upon y plus e to the power x upon y 1 minus x upon y is dy by dx. So assume x equal to vy. Okay. So what we can say, v plus y dv upon dy. So from the given equation dx upon dy, okay.
ये देखिए, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, या minus dy upon y. Now if you assume so dt upon t dy equal to k. x plus y e की पावर x upon y. A आ गया, ठीक है. The answer is A. Clear? So I'll meet you tomorrow again at the same time, बच्चों. I'll see you again tomorrow at the same time, and tomorrow we are going to complete the mathematics PYQ, and after that we will go on for the next subject. Okay? So tomorrow again 11 a.m. we are going to see mathematics PYQ from engineering services examination, and जैसा मैंने बोला, as I have told, this series is going to be bilingual in both English and Hindi.